Assalamualaikum students, hope so you will be fine. Today we will differentiate mass and weight. Mass basically is the measure of amount of matter in a material, while weight is a measure of how the force of gravity acts upon that mass. Mass basically क्या होता है? Mass किसी भी मटीरियल या ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट होता है वो उसका मैस होता है, जबकि वेट जो है, वेट इज़ अ फोर्स। वेट वो फोर्स है जो कि आपके मैस के अकॉर्डिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल के अकॉर्डिंग, मैस के अकॉर्डिंग अर्थ उसके ऊपर लगा रही होती है। अर्थ आपके मैस के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप पे लगा रही होती है या जिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, बेसिकली वो वेट है। दैट्स वाई वी कॉल्ड वेट इज़ अ फोर्स, एंड weight is a force, that's why it is measured in a Newton. Newton is a unit of force, while mass is measured in a kilogram. Another difference between mass and weight is weight changes from place to place while mass remains same. इसका मतलब है कि mass जो है वो आप चाहे कहीं भी हैं, जहाँ मर्जी खड़े हुए हैं या किसी भी जगह पे हैं, किसी भी शहर में है, किसी भी कंट्री में है, आपका मैस सेम रहेगा। लेकिन वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ से ऊपर मूव करते जाएं, जितना हम अर्थ से दूर होते जाएंगे, उसके सेंटर से दूर होते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ की वो वीक होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारा वेट भी कम होता जाएगा। क्योंकि वेट बेसिकली वो फोर्स है जो कि हमारे मैस के अकॉर्डिंग अर्थ हमारे ऊपर लगा रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से दूर मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो वीक होती जाएगी और हमारा वेट भी कम हो जाएगा। वेट इज़ अ फोर्स, इट इज़ इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑन अर्थ इट इज़ कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सर्फेस। द ग्रेटर द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द अर्थ, द लेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो द वेट विल also be less. Remember that the weight of an object depends on where it is. Since weight is a force, it is measured in newtons. Newton is a unit of force. Mass is a measure of how much matter an object contains. It is measured in kilograms. The mass of an object stays the same no matter where it is. Next question is that why is your weight less on moon than earth? And the answer is that our weight on moon is less than it would be on earth due to the difference of the strength of the gravity on the moon, because the gravitational force is determined by the mass and the size of the object. मीन्स कि जितनी अगर कोई बॉडी है वो बड़ी है तो उसकी ज़ाहिर सी बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। जैसे अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है एज़ कम्पेयर टू मून वो ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज अर्थ इज़ बिगर इन साइज देन मून। दैट्स वाई if we went to the moon, we would weigh less, but our mass stays the same. For example, a 60 kg mass weighs 600 Newton on the earth. However, on the moon, which is smaller than the earth, smaller in size than earth, the mass remains 60 kg, but it will weigh only 100 Newton. So, if you were to travel to the moon, your weight would change because the pull of gravity is weaker there than on earth. Your body's mass would not change because you would still have the same amount of matter in you. On the previous page, some information is given. On the moon, an astronaut's body mass will remain the same, but his or her weight will change. क्योंकि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। अर्थ के ऊपर डिफरेंट होगा, मून के ऊपर डिफरेंट होगा, लेकिन जो मैस होता है वो आपका सेम रहेगा, चाहे आप जिस मर्जी प्लैनेट पे चले जाएं, चाहे आप अर्थ पे हों या मून पे हों। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द एक्सरसाइज एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दिस क्वेश्चन। पार्ट 1, कंपेयर वेट एंड मैस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल ऑफ कंपेरिजन। We will compare mass and weight. The first comparison is weight is the amount of gravitational force acting on an object and it is measured in newtons,
While mass is a measure of how much matter an object contains, it is measured in kilograms. This is the basic difference between mass and weight. And the second difference is the weight of an object depends on where it is, while the mass of an object stays the same no matter where it is. Question number 5, part 5. Explain why the weight of a person or object decreases on the moon. And the answer is that on the moon, which is smaller than the earth, the weight would decrease because the pull of gravity is weaker there than on earth. We have discussed earlier, the moon is smaller than the earth in size, and the pull of gravity of moon is weaker than the earth. That's why our weight would decrease on moon. Okay students, hope so you will understand. Thank you for listening.